Print and Iron Limited. ये एक सम कर लेते हैं. You should assume that today's date is 1st of September 2025. Your manager has received a letter from Christiana. Christiana is the managing director of Sprint Limited and owns the whole of that company's ordinary share capital. Sprint Limited is a client of your firm. In addition to some ethical considerations which have been raised by a manager, advice is required in respect of ये सब चीजों के बारे में एडवाइस चाहिए. चलो भाई अभी हमको क्या करने का है. I would like you to prepare briefing notes covering the following issues. There will be quite a few points to draw to Christiana's attention, so keep each one fairly brief. Iron Limited Corporation tax payable. Assuming the entire ordinary share capital of Iron Limited is purchased by Christiana personally on 1st of November 2025, and ठीक है. Calculate the corporation tax payable by Iron Limited in respect of the 16-month period ending 30th of June 2026. State when this tax will be due for payment. ठीक है. Extract from letter from Christiana. I intend to purchase the whole of the ordinary share capital of Iron Limited on 1st of November 2025. My company, Sprint Limited, purchased components from Iron Limited, so the two companies will fit together well. ठीक है. I hope to increase the level, sorry, I increase the value of Iron Limited over the next 3 to 5 years and then to sell it at a profit. I need your advice on the following matters. Okay, corporation tax payable. Let's go. Iron Limited has not been managed particularly well. It has had significant bad debts and as a result needs more cash to determine its financial requirements. I need to know how much corporation tax Iron Limited will have to pay in respect of its results for the 16-month period ending 30th of June 2026. Iron Limited's tax adjusted trading income for this period is budgeted to be only 30,000. In fact, if we discover further problems, it is quite possible that Iron Limited will make a trading loss for this period. But please base your calculation on a budgeted profit figure of 30,000. ठीक है, तो हमको 30,000 बेसिकली है. Iron Limited has no other income than trading income. For following the acquisition, IL Limited will sell a small industrial building for 1,60,000 and an item of fixed machinery for 13,700 on 1st of December 2025. Tax adjusted trading income 30,000. ठीक है ना. Following the acquisition, Iron Limited will sell an industrial building for 1,60,000 and an item of fixed machine for 13,700 on 1st of December 2025. The industrial building and the item of fixed machinery were both purchased second hand on 1st of June 2020 for 1,13,500 respectively. At that time, rollover relief of 31,800 was claimed against the acquisition of the industrial building and 3,200 against the acquisition of the fixed machinery.
ठीक है। ठीक है। मैंने परचेज कब किया है? 1 नवंबर 25 को। मैं सेल कर रहा हूँ 1 दिसंबर 2025 को। फिर ठीक है। इन नोट्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो ये आता है सेल। 1,60,000। बेस कॉस्ट, हाँ इधर लिखूंगा मैं। बेस रोल ओवर रिलीफ। बेस कॉस्ट लेस ROR। अभी रोल ओवर रिलीफ क्या है? लेस रोल ओवर रिलीफ ये रहा। बेस कॉस्ट ये हो गई। तो अभी मुझे गेन्स इतने हुए हैं ना बेसिकली, सो दिस इज माय गेन्स। कंपनी है, सो कंपनी के लिए AEA माइनस नहीं होता। एक्चुअली डन। पेस्ट। ये हो गया। इसके बाद आता है अरे हाँ सॉरी, इसमें मैंने वो इसका तो किया ही नहीं। क्या बोलते हैं अपना टोटल फिक्स मशीनरी का। ये बाकी है ना। फिक्स मशीनरी। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया था। दे आर सेइंग दे हैड क्लेम्ड अ रोल ओवर रिलीफ। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे के परचेज के ऊपर मशीनरी के जो अपने AIA तो लिया रहेगा ना यार। है ना। परचेज किया 13,500 का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द टाइम रोल ओवर रिलीफ was claimed। इसके लिए भी ना यही कंट्रोल C कंट्रोल V। बेस कॉस्ट ऑफ बेस कॉस्ट ऑफ फिक्स मशीनरी 13,700। मुझे उसमें रोल ओवर रिलीफ कितना मिला था? उसका कॉस्ट था, एक मिनट ना, सॉरी उसका कॉस्ट ये नहीं था, उसका कॉस्ट था 13,500। उसमें रोल ओवर रिलीफ में था 3,200 का, तो इतना हो जाता है। फिर सेल के लिए मैं इसको बेचा 13,700 का। मेरा बेस कॉस्ट ये होता है, तो 3,400। एक्चुअली मैंने इस चीज को स्प्लिट नहीं किया ना, मैंने इसको बेचा कब, मैंने इसको इसको बेचा है 1 दिसंबर 25 और मेरा पीरियड 12 मंथ पीरियड का चालू कब होता है?
16 मंथ पीरियड एंडिंग जून में हो रहा है, तो मतलब 12 मंथ पीरियड एंडिंग 31st ऑफ, मतलब वो दिसंबर को हो रहा होगा। आई डोंट थिंक स्प्लिट करेंगे, मेरे तो पूरा ही इसको दे देते हैं, क्योंकि ये सारी ही चीजें बेसिकली क्या बोलते हैं अपन, 12 मंथ पीरियड में ही हुई है। अपन ने नवंबर को बेचा है ना यार ये, इंटेंट टू मतलब ये हर एक चीज, है ना। ये देखो फर्स्ट ऑफ दिसंबर को बेचा है, यानी कि इस 12 मंथ पीरियड के अंदर बेचा है, इस 4 मंथ पीरियड में नहीं बेचा है। बट फिर ये 4 मंथ पीरियड कैसे है, ये 12 मंथ पीरियड, ये 16 मंथ पीरियड टिल 30th ऑफ जून, एक्चुअली ये 28th ऑफ फरवरी तक होगा, है ना। ये 28th ऑफ फरवरी तक ये वाला पीरियड होगा। उसके बाद यहाँ से होगा मार्च अप्रैल मई जून, ऐसा ये लास्ट 4 मंथ, हाँ। तो चार्जेबल गेन्स ऑन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, देन चार्जेबल गेन्स ऑफ फिक्स मशीनरी, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर आता है कॉरपोरेशन टैक्स। अभी कितने कंपनीज है, आई इंटेंड टू परचेज होल और आयन लिमिटेड, स्प्रिंट लिमिटेड, टू कंपनी, तो द टू कंपनीज विल बी फिट टू, तो फिर ये दो कंपनीज है। तो मैं क्या करूंगा, अभी रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी लिमिट्स, वो कैसे करेंगे अभी अपन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट ना, 2,50,000, 50,000, दो ही कंपनीज हैं, और पूरे 12 महीनों के लिए है, पहला वाला पीरियड तो एटलीस्ट ये रहा। रिस्ट्रिक्शन ऑन द लिमिट्स, 12 months पीरियड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पीरियड्स, 4 मंथ पीरियड, इसको खाली हम लोग करेंगे इंटू 4/12, इंटू 4/12, परफेक्ट। दोनों ही एक्चुअली नहीं, ये वाला देखो, ये वाला मार्जिनल रेट में जा रहा है, तो इधर लिखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स 5%, कॉर्पोरेशन टैक्स, अरे यार ये शॉर्ट क्यों दब रहा है बार बार, 19%। अच्छा नहीं, इसको 25, इसको मार्जिनल रिलीफ लगाना पड़ेगा ना, रुक जाओ रुक जाओ, इसके ऊपर लगेगा 0.19, ये आता है टैक्स इसके ऊपर का। ये बीच में आ रहा है, मार्जिनल रिलीफ, रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, इसके और कितना आता है अभी, अपर लिमिट, augmented profits, which is this minus this, standard fraction 3/200, this into this, तो इतना, तो पता ही होगा, दिस ब्रैकेट इंटू 0.25 ब्रैकेट क्लोज माइनस दिस, तो ये होता है हमारा आंसर, ठीक है ना। यू आर गुड टू गो, होना चाहिए वायन लिमिटेड, क्या हो गया, ठीक है ना। इधर कुछ और एक कंपनी है ओलंपिक लिमिटेड, ये बाद में खरीदी है क्या ओलंपिक मोमेंट्स, वो लोग तो, नहीं, ये सेम ही ईयर में खरीदी है, मतलब पहले से ही है बेसिकली, डिवाइड बाई 3 होगा फिर ये एक्चुअली,
तो फिर अगर ये मेरे अपर लिमिट लोअर लिमिट है, तो ये तो पूरा ही टैक्सेबल होगा, ये निकल ही जाएगा मार्जिनल रिलीफ। नीचे आऊंगा, फिर ये आता है सही, ये वाला। हाँ, फिर ये वाला आता है एक्चुअली। फिर इसके ऊपर लगेगा मार्जिनल रिलीफ, रुक जाओ, अपर में ये आएगा, ये माइनस दिस, ये आना चाहिए ना फिर तो यार। मैंने अपर लिमिट क्या लिया है, एक सेकंड ना। अपर लिमिट ये नहीं ले सकता, अपर लिमिट मुझे ये लेना पड़ेगा। अपर लिमिट आया 27,700 माइनस ऑगमेंटेड एट प्रॉफिट 7,500। ये सब करके स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 304 का मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो आता है इतने का कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है। ठीक है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाइस, 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 नाइस। ड्यू डेट, हाँ उन्होंने ड्यू डेट भी पूछी थी एक्चुअली, अरे स्टेट व्हेन द टैक्स विल बी ड्यू, हाँ 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 हाँ। The due date for the taxation would be, इंस्टॉलमेंट का पहले देख लेते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस would be 15, एक दो तीन, डिवाइड बाय तीन, 3 is 5 lakh for the first 12 months period, for the second 4 months period। अभी ये दोनों के नीचे ही आ रहा है, so therefore no need for installment options to be selected, and thus the due date for filing would be 9 months later the accounting date। So 9 months later is 30th of June के बाद 31st of March 2027, and the payment due date will be 30th of June 2027। जस्ट है, बराबर है, ये बराबर है। डिवाइड बाय 3 करेंगे ना यार, इसको तुमने डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं किया? स्टूपिड। हाँ, क्वार्टरली आर नॉट रिक्वायर्ड, बट देन वैसे डेट क्या, ओके डेट्स यहाँ पे दिए, ओके यहाँ पे दिया 1 April 2027 को, इसका कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों का अच्छा, उन्होंने थोड़ा, अच्छा उन्होंने दोनों का पहले तो अलग अलग बताया हुआ है, ओके 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 ओके। हमने पूरे का एक साथ ही बता दिया। और उन्होंने आई थिंक खाली they have asked for due date of payment, this is, that is 9 months or what? Due date of payments would be, payment due date is 9 months and 1 day, 9 months and 1 day, oh god। अरे एक बार तो मैंने गलत ही लिखा था। इंस्टॉलमेंट इज नॉट सिलेक्टेड, दस द ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट एक्चुअली मैं लिखा था पेमेंट का एक साल बाद, बट पेमेंट का एक साल बाद नहीं, फाइलिंग का एक साल बाद है। और पेमेंट का 9 months and 1 day बाद है। सो दिस पीरियड एंडिंग वॉज 30th of June 2026। इसका ड्यू डेट वॉज 28th of
अरे यार, Feb is the due dates for payment for the accounting period endings would be 9 months and 1 day. So 9 months is 30th of June. Then 1 day is 1st of December 2026. यहाँ पे 9 months is 31st of March. 1 day is April 27. Okay, fine. This is how it is. My bad. We can go ahead. Ownership of Ion Limited. Explain the tax matters which Christiana needs to be aware of in order to decide whether or not ordinary share capital of Ion Limited should be purchased by herself personally or by Sprint Limited. You should assume that Ion Limited will be required to register for VAT. ठीक है. The ownership of Ion Limited and eventual sale of Ion Limited by either Christiana or Sprint Limited. You should recognize that regardless of who purchases and subsequent sells Iron Limited, Christiana intend to use the proceeds for personal purposes and that she is a higher rate taxpayer with substantial amount of investment income. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो if owned by Christiana, if owned by Sprint Limited ऐसा लिखेंगे. If Christiana intends to own Iron Limited, then first of all there are various measures that should be considered that during the eventual sale of Iron Limited, Christiana won't be able to gain a substantial shareholding exemption and would have to rely on beyond relief such as BADR or investor relief, depending upon whichever investor relief only. Um, that's the newspaper she has to rely on. However, on the other hand, if Sprint Limited owns Iron Limited, then upon the eventual sale of Iron Limited, there will be substantial shareholding exemption that Sprint Limited can claim if it owns Iron Limited for a period of 12 months out of the previous 6 years. ठीक है ना? Uh, the transfer of assets between Sprint Limited and Iron Limited can take place at no gain, no loss. The loss transfers can take place as per the corresponding period endings. Um if Sprint Limited owns Iron Limited more than 75%, ठीक है ना? हाँ, बराबर है. होल बराबर है. तो फिर इट विल कम अंडर 75% ग्रुप, रिलीफ ग्रुप एंड गेन्स ग्रुप. इन दोनों चीजों के बारे में बोल देंगे. अभी ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. आई नीड टू डिसाइड वेदर आई शुड परचेज द शेयर्स इन Iron Limited personally or whether the shares should be purchased by Sprint Limited. I will be managing director of Iron Limited regardless of who purchases the shares. My preference would be to own Iron Limited personally. However, I would be interested to learn any advantages of so many companies. When Iron Limited is eventually sold, I need to use the proceeds to purchase holiday home in Italy. देखो, तो उसको substantial shareholding exemption तो मिल ही रहा है, बराबर है. So that is one thing which she can use. Um, if she is using upon the eventual sale of Iron Limited, if she is intending to use the proceeds to purchase a holiday home in Italy, then that is not a then therefore no rollover relief can be claimed, as rollover reliefs are claimed on business asset selling and business asset purchasing. Um, substantial shareholding exemption बोलते हैं. What more? हाँ, disadvantages of owned by Sprint. If owned by Sprint Limited, then there will be number of associates and the divisible value and then the divisible value would be it would be divided by three number of companies as they are the associates and then into short and long accounting period endings. Upon that, the upper and the lower limits will suffer and the installments limit and restriction will also suffer. It will reduce. और क्या बोल सकते हैं? Frequent sale gains
If owned by Christiana, then upon the sale, annual exemption amount will be available for Christiana. As she'll be the managing director, she's already working and she'll be owning more than 5% as she's intending to purchase the ordinary share capital of Iron Limited, whole of the ordinary share capital of the Iron Limited. Um, therefore the availability of BADR increases, because of which entire sale proceeds will be taxed at the rate of 10% rather than at the corporation tax rate of 19/25%. She's a higher rate tax rate, वो तो बोला ही है. However, if BADR is not available, then she'll be taxed at the rate of 20%. Even if BADR is not available, she will be still taxed, being a higher rate taxpayer at the rate of 20% and not for 25%, which is the corporation tax rate. इतना सब बोल देंगे, आई थिंक इतना काफी है. मैंने वैट के बारे में क्यों बोला है यार, कुछ तो वैट का है भाई इसके अंदर, बताऊं मैं. वैट के लिए पता है, वो लोग बोल रहे हैं कि इंक्रीज द वैल्यू ओवर द नेक्स्ट ईयर, तो ये कुछ तो चेंज करने वाले हैं वो, राइट फिट वगैरह, तो ये लोग चेंज करने वाले हैं. हाँ, Sprint Limited purchase components for IM Limited, so the two companies will be good fit together. So ये basically वही no gain no loss पे ट्रांसफर हो सकता है बिंदास, ये अपन बोल देंगे. ठीक है ना. आई थिंक इतना काफी है, मतलब बहुत बोला है हमने वैसे भी. Corporation tax, it would be advantageous for Sprint Limited rather than Christiana to purchase Iron Limited for the following reasons. It is possible that Iron Limited will make a trading loss for the period ending 30th of June 26. If this were to occur, a proportion of loss would be surrendered by way of group relief to Sprint Limited and or to Olympic Limited, and be deducted in arriving at the taxable total profits of the receipt of the recipient company. Whilst all three companies remain in the group, group relief group would be available between them in respect of any losses in future periods, and United will join Sprint Limited's capital gains group on 1st of November 2025. A capital loss to be made by Sprint Limited on the sale of the warehouse could therefore be relieved against the chargeable gains to be realized by Iron Limited on the sale of the industrial building and fixed machinery. This would reduce the corporation tax liability of Iron Limited by ठीक है, मैंने खुद ने बोला हुआ चार्जेबल गेन्स बेसिकली. तो ठीक है, इवेंचुअली हम लोग को ये बोलना है कि कैपिटल लॉस और जो लॉसेस है वो सब ट्रांसफर हो सकते हैं. गेन मेड बाय वन कंपनी इन द ग्रुप ऑन द डिस्पोजल ऑफ क्वालिफाइंग बिजनेस एसेट कुड बी डेफर्ड इफ, अरे हाँ, रोल ओवर रिलीफ, ये भी एक है. ये अपन नहीं बोला कि बेसिकली वन कंपनी sells an asset and then there is, मतलब वो रोल ओवर रिलीफ कैन बी claimed if the other company purchases the asset in front of it. Any future transfer of assets from one group compared to another would take place at no gain, no loss. ये अपन ने बराबर बोला. There is a possible disadvantage in Iron Limited joining Sprint Limited group of companies in relation to capital allowances. Annual investment allowance will be, हाँ actually अपन ने upper limit lower limit बराबर बोला, इंस्टॉलमेंट का रजिस्ट्रेशन बराबर बोला. ये लोग ने यहाँ पे बोला है एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी डिवाइड होगा कंपनीज के अंदर, वो भी ठीक है. Whereas additional full annual investment allowance will be available to Iron Limited if Christiana were to own Iron Limited personally. हम्म, ठीक है. सेल के टाइम पे ये देखो, ये वाला ऐसे सी बराबर है. वैट में बोला इन्होंने, वैट के बारे में कुछ तो बोला है. इट मे बी बेनिफिशियल फॉर स्प्रिंट लिमिटेड एंड आयरन लिमिटेड टू रजिस्टर एज अ ग्रुप फॉर द पर्पसेस ऑफ वैट. ठीक है. दिस इज बिकॉज इट वुड रिमूव It is because it would remove the need for Iron Limited to charge VAT on the sales it makes to Sprint Limited. This will, however, be possible regardless of who owns Iron Limited, because Christiana will have effective control of three companies in both situations. तो फिर ये लाइन डालने की जरूरत ही है अगर फैट का दोनों में सेम ही इफेक्ट है तो. ठीक है. एसएससी के लिए बोला हुआ है. Although existence of SSC would appear to be significant advantage, it should be recognized that the proceeds on sale will need to be transferred to Christiana. This could be carried out via
For example, the payment of a dividend to Christiana, as Christiana is a higher rate taxpayer with substantial amount of investment income. Christiana is a higher rate taxpayer, ठीक है ना? With substantial amount of investment income, she is likely to have used her dividend nil rate band. Therefore, she would have an income tax liability of 33.75 and 39.35. Okay, upon the sale of it, basically बोलना चाहते हैं कि क्रिस्टियानो को क्या आएगा। देखो अगर क्रिस्टियानो ने ओन किया तो ये देखो क्या होगा, चार्जेबल गेन वगैरह आएगा इक्वल टू एक्सेस प्रोसीड्स, एनुअल एग्जाम अमाउंट मिलेगा, विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन्स एट 10%, बीएडीआर परफेक्ट बोला, बीएडीआर विल बी अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, परफेक्ट, ये सब हमने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है ना, बैडर वगैरह मिलेगा, हाँ सही है। आई थिंक हमने वी आर स्टिल एबल टू आंसर गुड अमाउंट ऑफ दिस आंसर। एआईए के बारे में हमने नहीं बोला कि एआईए का भी लिमिट वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बट वो भी होता है, ठीक है ना। 24 marks हो गए। That is, set out the matter which Christiana should be aware of in relation to the need for IN Limited to register for VAT and the implications for that company of registering late registration. I think there are penalties यहाँ पे भी है ना VAT के। registration standard rate is 20% हो सकता है, ठीक है, penalties पर नहीं बोला, VAT payments के limitations, that's fine. Then IN Limited is not registered for the purposes of VAT. Okay, the current management of the company has told me that the level of bad debts is keeping the company's cash receipts in the 12-month period below the registration limit of 90,000. Or I suspect that when I have the opportunity to look at these figures in more detail, it will become apparent that the company should be registered. Okay. Uh, a company has to compulsorily register for VAT if its taxable supplies for the period of 12 months exceed 90,000. ठीक है ना? Uh, 90,000. If company register for VAT, then it would be able to claim its input VAT, which it has incurred on the purchases. It seems that currently Iron Limited is using the cash system, because of which the cash receipts, the guys keeping company's cash is. It seems that in the current scenario, we can see that current management of the company has told that the bad debts are keeping the company's cash receipts below 12 months. It should be first looked upon whether these bad debts have been written off or not, because if not, then still they will be considered in the taxable supplies of 90,000. ठीक है ना, तो राइट ऑफ करना चाहिए। But I suspect and I will look at these figures. If HMRC catches the company, ऐसे नहीं बोलना चाहता मैं, क्या मतलब catches वगैरह, but if we are late for registering for VAT and HMRC knows about this, then various penalties and interest will be charged upon the late VAT registration. अभी वो कितने होंगे, let's see, अमाउंट मुझे नहीं पता। Annuity should be monitoring the level of taxable supplies, excluding the sales of capital assets, as opposed to its cash receipts, in order to determine when it needs to be registered for VAT. Implications: the iron limited will be required to account for output tax on the sales it has made after the date on which it should have been registered. This will be a cost to iron limited unless it is able to recover VAT from its customers. Penalty may be charged for failing to register by appropriate date. This penalty would be percentage of the potential lost revenue, where the percentage depends on the reason of late registration. Okay, okay. Interest may be charged in respect of late paid. ये तो अपन ने बोला, interest and penalties तो अपन ने बोला, but failing वो भी अपन ने बोला कि failing to register by a appropriate date, ठीक है, but they have said penalty depending upon the potential lost revenue, depending upon the reason for late registration, मतलब carelessness था, deliberate था, वो सब, ठीक है ना। should monitor the level of taxable supplies, वो तो बराबर है, मॉनिटर करना चाहिए। तो उन्होंने बस वही चीज बोली है, देखो यहाँ पे बस उन्होंने बोला कि हमको आउटपुट टैक्स के लिए अकाउंट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच द प्राइजेस ऑफ आर प्रोडक्ट विल इंक्रीज, वो सब ठीक है ना, एंड हमें उतना पेमेंट एचएमआरसी को देना है। हमने बोला कि हमें इनपुट वैट का क्लेम मिलेगा,
वो लाइन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट टैक्स के बारे में डालना ज्यादा जरूरी है एक्चुअली, इवन आई फील दैट। ठीक है, आगे। Olympic Limited will commence Project Whistle in 2026. As part of the project, Olympic Limited will engage in scientific research, some of which will be qualifying research and development revenue expenditure due to the significant costs involved. Olympic Limited is expected to make a trading loss in the year ending 30th of June 2027. Please explain how any other trading loss made by Olympic Limited in the year ending 30th of June 2027 can be relieved. How relief will be given for research and development expenditure in the year ending 30th of June 2027? How ही पूछा है हमको, थ्योरी नहीं पता, मतलब हमको नंबर्स कैलकुलेट नहीं करना है, सो दैट्स गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सीम्स दैट अच्छा ठीक है, उन्होंने कुछ नंबर्स दिए भी नहीं है, वाह। नाइस 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 नाइस। ये काफी अच्छी चीज हुई है, काफी अच्छी चीज हुई है अभी हमारे साथ, क्योंकि हमें कुछ फिगर्स आए ही नहीं है। तो मैं बताता हूँ, पहली बात तो लॉस के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, मुझे बहुत सही लग रहा है, हाउ रिलीफ ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द एक्सपेंडिचर विच हैज बीन incurred on the research and development, uh, for the research and there will be certain expenditure which will be qualifying research and development revenue expenditure. Therefore, the RDEC scheme would come into play here, on which the qualifying revenue expenditure is being categorized, and then a 20% relief is given on them. So, therefore, upon the qualifying revenue expenditure, a 20% deduction is given, and then the value of the cost reduces, because of which higher taxes, a little higher tax is paid as the cost has reduced. However, the same relief amount of 20% will be given as a relief after all the computations and the liabilities have been carried out. For example, if the qualifying research and development expenditure is 1 lakh, then 20,000 deduction is come into play, and then the cost and thus the cost will be 80,000. Once the cost is 80,000, higher tax is paid on the 20,000 amount. For example, 20,000 into 0.25. So therefore, 5,000 extra tax has been paid. But still, it is beneficial because the 20,000 amount that was reduced before is been given as a relief after all the is been given as a relief on the liability, on the eventual corporation tax liability, ऐसा अपन बोल देंगे। ठीक है ना? थिंक ये अपन ने बहुत सही बोला है। अभी आता है कुछ लॉस होगा तो हम उसका क्या करेंगे। तुमने एग्जिबिट दिया हुआ है, बट पता नहीं, मेरे को एग्जिबिट पढ़ने का मन ही नहीं गया भाई, मतलब मेरे को इधर से आंसर आ रहा था। अभी ये पढ़ते हैं, स्प्रिंट मेंटर ऑफिस सरप्लस, या ये सब जाने दो। ओलंपिक लिमिटेड, स्प्रिंट लिमिटेड ओन्स अ होल, और ठीक है। वो दीज कंपनीज आर प्रॉफिटेबल अकाउंट में, ठीक है, वो उसमें ठीक है। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्प्रिंट लिमिटेड विल सेल द वेयर हाउस resulting in a capital loss of 18,000. Iron Limited currently has an accounting reference date of 28th of February 2020, ठीक है। Following its acquisition, however, its next set of accounts will be for 16 months ending एज नो एसोसिएट कंपनीज। तो ये है ही नहीं भाई, ओलंपिक के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। परफेक्ट, तुमने सिर्फ इतना ही लाइन बोला है। तो ये जो लास्ट आंसर है ना, ये वाला, ये बहुत ही जेनरिक आंसर है। और इवन ये वाला जो है, ये हमारा स्टैंडर्ड एथिक्स का आंसर है, काफी सिक्सी। अभी ये तो हमने बराबर बोला, हाउ एनी ट्रेडिंग लॉस मेड एंड कैन बी सेटेड ऑफ ना। तो एनी ट्रेडिंग लॉस विच इज मेड बाय द ओलंपिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th ऑफ जून 2027 कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, कैन बी ट्रांसफर्ड टू स्प्रिंट लिमिटेड फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड एंडिंग। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू आयन लिमिटेड, एज वी कैन सी। आयन लिमिटेड बेच रहे हैं ना, आयन लिमिटेड को, कि नहीं? नहीं बेच रहे, सॉरी 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 सॉरी, can be transferred to Sprint Limited and Iron Limited, as we come under the 75% group relief group. We both come under the 75% group relief group. This same trading loss can be set it off with the previous year once the current year claim has been made. Therefore, the trading loss would be should be set it off with the current year profits of all Olympic Limited carried back in the previous year to set off there. If not, then carry forward should take place. Uh, Carry forward should take place. Then later on, this same loss can be transferred to
ओलंपिक टू स्प्रिंट लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ये तो अपन ने बोला। इसके बाद ये जो वेयर हाउस बेच रहा है ये भी गेम्स ग्रुप में आते हैं, इसलिए ट्रांसफर कर सकता है कैपिटल लॉस भी, ये भी अपन बोल सकते हैं। आई थिंक हमने काफी सब चीजें सही बोली है यहाँ पे, ठीक है ना। करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड वो भी एक ऑप्शन है। However, when we are carrying back, if there are any QCDs, then those will be wasted. I think ये आंसर हमने काफी काफी कुछ बोल सकते हैं इस आंसर के ऊपर। Let's check. Loss leaves available. The trading loss made by Olympic Limited in the year ending 30th of June 2027 can be relieved in the following ways. It can be offset against the incomes and gains of the Olympic Limited and or the taxable total profits of other companies in the Sprint Limited Group Relief Group. Olympic Limited could offset the loss against its total income and gains of the loss-making period and then against total income gains of the previous 12 months. बराबर है loss could also be offset against the current period taxable total profits of Sprint Limited and any other company which is an effective 75% subsidiary of Sprint Limited. Any loss remaining to be carried forward by Olympic Limited for the relief against its future total profits with group relief possible for any excess. एक मिनट ना, any loss remaining will be carried forward, ठीक है। अभी आता है रिलीफ फॉर रिसर्च एंड डेवलप, तो ये मैंने बराबर बोला। ग्रुप रिलीफ हॉस्पिटल हमने थोड़ा ज्यादा बोल दिया यहाँ पे एक दो चीजें, बट दैट्स फाइन। Olympic Limited can claim 20% tax credit on the qualifying revenue expenditure. 20% of the qualifying expenditure is an additional amount of trading income, therefore reducing the trading loss available for relief, and the tax rate equal to the same amount is offset against the corporation tax liability for the accounting period. हमने एक्चुअली यहाँ पे थोड़े ज्यादा एक्साइट होके हमने बहुत ज्यादा बोल दिया है एक्चुअली। यहाँ पे इन्होंने कैसा बोला है, इतने में ही उन्होंने खत्म कर दिया 4-5 लाइन के अंदर, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। एज ओलंपिक लिमिटेड इज अनलाइकली टू हैव एनी corporation tax liability this year due to trading losses, any unused credit can be carried forward and used against the corporation tax liability in the future accounting, can be carried forward and used against the, हाँ बराबर है एक्चुअली। सो इफ देर इज एनी मतलब ये जो रिलीफ है 20% का, अगर हमने करंट ईयर में लॉस किया हुआ है तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर हम HMRC से क्लेम ले सकते हैं, या फिर हम सरेंडर कर सकते हैं हमारी किसी 75% ग्रुप कंपनी को। हमने वो नहीं बोला, हमने बस इतना बोला कि वी विल क्लेम अ टैक्स क्रेडिट, बट ये 3 पॉइंट्स भी है, ठीक है ना। वी कैन क्लेम अ रीपेमेंट फ्रॉम HMRC, we can carry forward this tax credit for any future profits or any future corporation liabilities that arise, and the same relief can be surrendered to our group company, 70% group company, ठीक है। आगे Sprint Limited and rental income. Explain the matters we should draw to Christiana's attention with regards to non-disclosure of rental income in Sprint Limited and any actions our firm should take. So first of all, मुझे अब ये आंसर पता है, ये स्टैंडर्ड एथिक्स का आंसर है। Sprint Limited has recently started renting out some of the surplus of it, ठीक है। As the amount is quite small, I do not plan to do disclose this to HMRC, ये तो गलत बात है। We should advise Christiana that the excess surplus office space which has been renting out for some time and has been giving them an income of 1,000 a month should be disclosed to HMRC, as this will eventually be 12,000 pounds in an annum in a full annual year. And then हमको ये बताना चाहिए, if Christiana still if Christiana does not follow our advice and still does not disclose this amount to HMRC, then we should inform the HMRC that we no longer act for the client and we should resign from our position without informing the HMRC the reason for the same. मतलब we should inform the HMRC but should not give a reason for the same. Then later on, हाँ अपन ये एक लाइन ऊपर ऐड कर देंगे कि वी शुड नॉट डिस्क्लोज दिस अमाउंट टू HMRC विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम क्रिस्टियाना। लास्ट में लिखेंगे वी शुड ऑल्सो इन्फॉर्म अवर मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर रिगार्डिंग what has taken place and so that the further actions can be carried out by them. तो ये देखो आंसर, वी शुड एडवाइस स्प्रिंट लिमिटेड टू डिस्क्लोज। स्प्रिंट लिमिटेड है, क्रिस्टियाना नहीं है, ठीक है। जो भी मतलब वो क्वेश्चन से देख के बाद में उस दिन देख लेंगे, ठीक है ना, जो भी।
You should advise Print Limited to disclose the additional rental income to HMRC as soon as possible. The amount of the income is irrelevant. We should check our engagement letter to see if we have the authority to disclose the income to HMRC. If we do not, then we cannot make a disclosure due to client confidentiality. It is important to bring to Sprint Limited's attention that it may be subject to penalties if it does not disclose the income. If Sprint Limited refuses to disclose the income, then we should consider resigning from our engagement. If we resign, then we should inform HMRC that we no longer act for Sprint Limited, but not disclose why. Non-disclosure of income is a form of tax evasion and could result in criminal prosecution. We must bring it to we could bring this to Christiana's attention. We must bring it to the attention of Christiana. Why? We should consider whether it is necessary to make a report to the firm's money laundering reporting officer. If a report is made, we should be careful not to tip off the client. ठीक है, not to tip off tip off the client. ठीक है भाई, जो भी है, that's fine. Okay.